Hi. Uh, So let's start this wonderful critical thinking workshop number 1 today. Uh, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इनको आइडिया अभी तक जरा उनके लिए नया है ये कि what is going to happen in this workshop? What do we, how do we conduct it? What are we going to do in this? The basic idea is कि मैं अभी थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स को ये बता रहा था कि आमतौर पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के दौरान हम अपने जो ट्रेनीज हैं उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के लिए इस तरह की वर्कशॉप जो है वो किया करते हैं. At the same time, during the last many years, I have been doing it with the aspirants also. Go के ये recorded sessions में शायद मेरा पहला सेशन होगा आप लोगों के साथ. इसमें ज़्यादातर aspirants है इस वक्त मुख्तलिफ क्लासेस में से मुख्तलिफ बैचेस में से मेनली जो था वो OB23 के साथ कल बात स्टार्ट हुई थी. और ख्याल ये था कि जो लोग हिस्सा लेना चाहें इसके अंदर मोस्ट वेलकम. ये कोई कंपलसरी नहीं है और इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की डेवलपमेंट के ऊपर हम बात करेंगे. इसका ताल्लुक CSS या PMS या किसी एक एग्जामिनेशन से नहीं होगा. हमने कोई ऐसे राइटिंग के ऊपर या प्रेसी के ऊपर कोई पर्टिकुलर नोट्स या उसकी स्किल्स या उसकी बात नहीं करनी. This is not regarding the examination. Critical thinking is a life skill. It's a life skill. ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो स्किल सीखने की कोशिश करते हैं सिर्फ इम्तिहान के लिए और नहीं सीख पाते. उनका ये ख्याल होता है कि हम सीखेंगे और आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू अनलर्न दैट आल्सो. वेयर एज दीज स्किल्स स्टे विद यू फॉर लाइफ. जब तक आप सोचना क्रिटिकली नहीं सीखेंगे उस वक्त तक कोई भी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट या कोई पोजीशन या किसी भी किस्म की जॉब या काम जो है जिंदगी में वो मुश्किल है करना. इसलिए कि जब तक बंदा एनालाइज नहीं कर सकता, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती, उस वक्त तक एक बड़ी बेसिक सॉर्ट ऑफ लिविंग इंसान जो है वो लाइक अनएजुकेटेड पीपल जो है वो गुजारता रहता है. लेकिन एजुकेटेड माइंड से हमारी मुराद ये होती है, एक्सपेक्टेशन ये होती है कि दिस इज गोइंग टू बी somebody who can analyze something. और सुन सारे लोग लेते हैं, पैसिव लिसनिंग जिस तरह टीवी सुनाता है आपको तो सारे कर लेते हैं, लेकिन एक्टिव उसके अंदर पार्टिसिपेशन, इंटरैक्टिव लर्निंग जो है ये बेसिकली किसी भी अच्छे एजुकेटेड माइंड की का टेस्ट होता है. During this workshop, I'm going to conduct a number of activities with you. We were just now testing sound, mics. I want to switch on the audio with these people also. Debate थोड़ी सी करेंगे जिसके ऊपर जो है वो different points of view जो है वो करने हैं. और बेसिक पर्पस ये है कि किस तरह से एक ऐसी सिचुएशन जो आप पहली दफा देखते हैं, सिनेरियो कोई ऐसा आपको दिया जाए which you see for the first time, and then you come up with different ideas about that, how quickly you can do it and how well you can come up with different points and different ideas about that. That's the practice basically. I will be giving you certain prompts iske upar. My long experience of working with the critical thinking groups and associations has prepared me quite well how to conduct such workshops and how to prompt people or encourage people to move on with presenting your ideas. ये याद रखें, there is no right or wrong answer. Critical thinking, whatever you are thinking, you are expressing, and it is most welcome. So this is a forum which is not a question answer based forum. It's not a question, it's not an answer, no right or wrong कि आप ये करेंगे तो आपको इतने नंबर मिलेंगे, आपको ये करेंगे तो इतने. This, it's nothing like that. It's an open forum, it's a workshop. The basic purpose is to learn something which will be helpful for you in other pursuits, the academic or the non-academic pursuits. मैं अपना नाम तो बताना भूल गया हूँ. Okay. Recording जो है इस वक्त I'm recording it. I will see afterwards what's to be done with this, and I would be of course sharing it with the others also. So don't worry, don't try to record it yourself. There is already one recording going on. Okay, right. सब बता दें, अपना नाम भी बता दें. स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ जा रहा है डॉक्टर आरिफ जावेद, वो काफी नहीं है. All right. Okay. So starting with the first of all, the um, the best thing is always to
dive directly into the PPT and take leave from the video and start with the slides. Okay, so here we are with the, I designed it especially for this workshop. I must say that this is first of its series. ये एक क्रिटिकल थिंकिंग वर्कशॉप ऐसी होगी जो कि मैं रेगुलरली कंडक्ट करना चाहता हूँ. आप लोग नेक्स्ट टाइम भी यू विल बी मोस्ट वेलकम, and new participants also, and always the activities are going to be new ones. So first of all, we need to understand what are critical thinking skills. मैं ऑलरेडी एक वीडियो इसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स फॉर स्पेशली, और उसके साथ मैंने CSS के जो था एग्जामिनेशन उसका टैग लगाया था. ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ विच इज अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल. But to repeat here, what are the critical thinking skills? When we say skills, what do we mean by that? It is analysis. First of all, you must have the ability to analyze things, and then सिर्फ एनालिसिस कर लेना जो है वही काफी नहीं होता जब तक उसको कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता. एनालाइज आप देखेंगे, बाद औक़ात मैं हैरान होता हूँ कि बाज़ लोग जो अनएजुकेटेड है, मैं इलिटरेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन आज अनएजुकेटेड जो लोग हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस जो है वो पेश करते हैं. एंड समटाइम्स देयर एनालिसिस इज फार मोर डीपर एंड हिरा, आप क्वेश्चंस मुझे नहीं कर सकेंगे बेटा इसके अंदर, ये कोई क्लास नहीं चल रही. इज देयर एनी स्पेसिफिक नंबर ऑफ दीज स्किल्स? नहीं, कोई ऐसी नहीं है. मुझे प्लीज अब आप, अगर मैं चैट ऑफ नहीं करना चाहता, लेकिन इफ यू होल्ड योर मैसेजेस तो जरा इजी रहेगा थोड़ा सा इसको कंडक्ट करना. ओके, थैंक यू. सो एनालिसिस सिर्फ काफी नहीं है, कम्युनिकेशन जो है वो भी साथ लाजमी है. मैंने देखा है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि बाज लोग एनालिसिस उनका बड़ा जबरदस्त होता है, लेकिन सिर्फ ये होता है कि वो उन टर्म्स में कम्युनिकेट नहीं कर पाते जिन टर्म्स में आमतौर पे लोग उसको ज्यादा बेहतर तौर पे समझते हैं या समझना पसंद करते हैं. ओपन माइंडेडनेस इज वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. अगर आप अपने आप को पाबंदी लगा के सोचेंगे कि जी नहीं, इस तरीके से सोचना है और इस असूल के तहत और इस बिलीफ के तहत, तो फिर जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसके ऊपर. हाँ, हम लेंस अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ भाई, इसको नेशनलिस्ट लेंस के साथ देखा जाए इस सिचुएशन को तो क्या होगा. आप इसको इंटरनेशनल लेंस के साथ देखें इस सिचुएशन को तो कैसे नजर आएगी. आप इसको रिलीजन के लेंस के साथ देखें तो किस तरह से नजर आएगा. सो लेंसेज जो हैं वो चेंज किए जा सकते हैं. इसका बेसिक पर्पस है प्रॉब्लम सॉल्विंग. सिर्फ और सिर्फ एनालाइज कर लेना किसी प्रॉब्लम को काफी नहीं है, अनलेस वी कैन एक्चुअली रीच इट्स सोल्यूशन आल्सो. अब सोल्यूशन के ऊपर काफी सारी जो है लोग आते ही सोल्यूशन समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ सजेस्ट करना है और उसके ऊपर उसको एक्ट आउट करना असल में दूसरे लोगों का काम है. नो, द सॉल्यूशंस शुड बी, क्यों हमारे, हाँ ये पाकिस्तान में देखा गया है कि मशवरे देने वाले तो सारे हैं, हमारी नेशनल हैबिट है, हम बहुत ज्यादा मशवरे देते हैं, लेकिन क्या वो काबिल अमल होते हैं? क्या उनके ऊपर किसी किस्म का कैन वी एक्ट देम आउट? वेरी ऑफन वी हैव सीन कि नहीं, वो तो सिर्फ बस वो मशवरा दिया गया है और हाईली इम्प्रैक्टिकल और नॉट प्रैक्टिकेबल एट ऑल एंड थिंग्स लाइक दैट. सो मशवरा देने का एक बड़ा सादा सा वो रूल ये है कि उसको यूं चेक करें कि जैसे आपने खुद उसको इनएक्ट करना हो. सिर्फ दूसरे को कह देना नहीं भाई आप फलां को कंसल्ट कर लें, फलां चीज कर लें, फलां चीज कर लें. सपोज यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, हाउ विल यू डू इट? और देखेंगे कि जो ही आप ये वाला चेक अप्लाई करें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे कि यू आर इन अ पोजीशन टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, फिर क्या आप ये वाला मशवरा देंगे या कुछ और देंगे? सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड क्रिएटिविटी. अब जाहिर है ये सीक्वेंस नहीं है. Some people believe that creativity comes first for analysis.
It's not necessary, because those who are not creative but still they are highly analytical, for example in the education system in Pakistan, it does show you how to analyze things, but it hardly ever teaches creativity. Now, critical thinking also compels us to differentiate these terms very clearly. For example, being creative does not mean that you are analytical, and vice versa. At the same time, one may be very creative and not communicative. People may be quite open-minded, but they do not analyze things properly. Sometimes it's too much cultural bias, there is too much religious bias, or there's too much emotional bias in whatever they have to suggest. And then people may be creative and they may not be solvers. They may not have practical problem solving skills. Similarly, there may be people who are very good at problem solving, but they are not very creative. They can make 2 plus 2 4, but ultimately, when there are different difficult situations, they tend to look towards the past, which is hardly ever. काफी सारे लोग ये समझते हैं कि नहीं जी, पास्ट की जो एनालिसिस है, पास्ट का जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत काम आता है फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. The world is proving this to be otherwise, because we have seen that the analog problem solving skills are mostly not applicable on the digital problems. Digital analytical skills are sometimes not applicable on the real life problems, so on and so forth. जिसका मतलब ये हुआ कि आज की दुनिया में हमें डिफरेंट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स चाहिए डिफरेंट फील्ड्स के लिए. And this is possible only through being analytical, being creative, being communicative, being open-minded, and having a problem-solving approach. सिर्फ इसलिए नहीं हम प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे कि हमने टाइम पास करना है और प्रॉब्लम के बारे में बस बातें करके चले जाना है. No. Practical. The approach should be practical. We are not, right now, I'm not conducting this workshop just for the sake of some activity, or holding some intellectual, or indulging in some, or bringing people into some intellectual activity. There's something more than that. The basic purpose is to equip these people in this meeting with problem solving skills. So let's move ahead and see how these skills, critical thinking skills, can be enhanced. I won't say that they can be created only. Already you people have that. The only issue is that you have not been given too many chances to exhibit your critical thinking skills. And this is why we are here today. Now, one of the basic, I would say, habits that you must develop is look much deeper at who we are, both as individuals and as a society. And it is always this combination and correlation of individual with society, or society with individual, which actually brings out various dimensions. ये वो लेंस है जो हमें most of the time apply करना चाहिए हर चीज के ऊपर. Atomic bomb, nuclear bomb के साथ, although question बहुत पुराना है, it's about 90 years old question, whether to make a nuclear bomb, whether such a powerful bomb should be made or not. If we look at it as society, our answer may be different. If we look at it as an individual, our answer may be different. How to align these individual goals with the social goals, societal goals, that is a debate in itself. और आप देखेंगे कि इन्हीं दो चीजों के अंदर तमाम डिबेट्स ज्यादातर जो आपको डिस्कशन होती नजर आती है वो इन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर जो है नजर आती है. So let's move forward. I will ask you to be in this mode right now. अब हम यहाँ से onwards जितनी भी बातचीत करेंगे उसके अंदर आपका बेसिक जो फंक्शन होगा वो is both. I will ask you to speak as an individual,
as well as member of society. Okay, so let's start the activities. Scenario 1. मैं अब आपके सामने एक सिनेरियो रखूंगा और इस सिनेरियो के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे और उन क्वेश्चन को हमने एक एक करके उसके ऊपर बोलते हैं, डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि हमारे उसके देयर आर नो राइट और रॉन्ग आंसर्स, मेरे पास कोई आंसर्स नहीं है और आपके साथ मिलके तो एक्सप्लोर करना है. बेसिकली आई वांट टू लिसन टू यू पीपल. बेसिकली आपको एक मौका देना है कि आपको इन सिचुएशंस को एनालाइज करने का मौका मिले. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, देयर इज the scene is of Earth and there is a UFO. Aliens are visiting the Earth. Suppose you are conducting a tour for aliens who are visiting Earth and observing humans. Interesting. You are all in their spaceship. When you fly over a football stadium, वो आपको साथ ले गए हैं अपने स्पेसशिप में और ऊपर से दुनिया को देख रहे हैं. And when they pass over a football stadium, one of the aliens is confused and turns to you for help. उसको समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है नीचे. ये गोल सा एक स्टेडियम है, लोग बहुत से उसके अंदर इकट्ठे हुए हैं and there are some humans. उसके अंदर जो एक्टिविटी चल रही है, what is this? Try answering these questions. ओके, सिनेरियो समझ आ गया आपको? फुटबॉल स्टेडियम है, ठीक है. अब इसमें से निकलना नहीं है और हम फुटबॉल स्टेडियम के अंदर मौजूद नहीं है, हम स्पेसशिप में उसके ऊपर मौजूद हैं. एंड वन ऑफ दी, और सारे एलियंस को आप तकरीर नहीं कर रहे उनके सामने, वन ऑफ द एलियंस इज कंफ्यूज्ड एंड आस्क्स दीज क्वेश्चंस. एंड जाहिर है, इफ इट इज अबाउट स्टेडियम तो इट्स अबाउट गेम्स. सो फर्स्ट थिंग दे आस्क इज, व्हाट इज अ गेम and why do humans play them? Okay, let's start it. अपने माइक ऑन करके एक एक करके जरा आप जवाब दीजिएगा. Why do we सर play? Why do we play games? सर फिजिकली फिट रहने के लिए और एंटरटेन होने के लिए. अच्छा, अब मेरे सवाल के जवाब नहीं देने, अब आप बोलते जाएंगे, अब डिस्कशन आप लोगों की है. ओके सर. मेंटली फिट रहने के लिए भी गेम्स बहुत जरूरी हैं. एज एन इंडिविजुअल आई विल से दैट के मेंटल आप हेल्थ उस बहुत एलियन को समझा रहे हैं, क्या उस एलियन को इन बातों की समझ आएगी? Basically, we play games as a layer also to, नहीं, we don't know ना. We are aliens, we don't know. Okay, so we play games for as a recreational activity, as part of like fun, and I guess हम to पहले stay उनको healthy also. ये बताएंगे कि गेम्स हम लोग पीपल्स आपस में दो टीम्स वगैरह होती हैं और कोई भी गेम होती है, मुख्तलिफ गेम्स होती हैं और उसमें मुख्तलिफ उसके रूल्स होते हैं. फिर सीधा हम उसको फुटबॉल के बारे में बताएंगे कि इस तरह की दो टीम्स होंगी, 11 होते हैं. So this is what is the game. Okay. This is what is. I think. I think. The game is basically a physical or a mental competition which has certain roles and the participants are in direct opposition to each other. Depending on the question, पहले आप उनको बताएंगे कि इंडिविजुअली जो है वो गेम क्या चीज है. मतलब इंडिविजुअल बेस पे जो कंपटीशन है गेम का, उसके लिए एक इंडिविजुअल के लिए उसको जीतना कितना जरूरी है और क्यों ये खेल रहे हैं, और सोसाइटी के लिहाज से वो गेम जो है उसका क्या इम्पोर्टेंस है. So अगर आप माइक ऑन करके We बोल रहे would tell them that a game is a competition among individuals, and humans play them for various reasons, like to intellectually involve in something, and for a rush in their adrenaline. So there are Excuse me, I had to mute everybody because we are running into some problem. Okay. Yes, please.
You can unmute yourself now. Hello. Let's move on to the next question. When you look at the next question, you will find out कि शायद कुछ ज़्यादा clearly आप इसका जवाब जो है वो दे सकते हैं. What are teams and why are they so important for humans to be part of? टीम में खेलना क्यों जरूरी है? क्यों नहीं अकेला बंदा ही बॉल लेके तो दीवार के साथ उसको स्क्वाश की तरह खेलता रहे? सर मोहम्मद इमरान अर्ज़ कर रहा हूँ। सर टीम्स इसलिए ज़रूरी हैं कि हमारे माशरे में कोई भी एक इंसान पूरे माशरे के तमाम काम नहीं कर सकता। हर इंसान में कोई ना कोई एक सलाहियत होती है जो उसमें ज़्यादा होती है और बाकी इंसान फिर उसकी मदद के लिए उसके मतलब उससे मदद लेना चाहते हैं उसकी, ताकि वो स्पेसिफिक जो काम है उसका वो करे। तो इस तरह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिवाइड किए जाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करने से इस तरह से राइट्स एंड लायबिलिटीज़ वो सारी डिवाइड हो जाती हैं। तो सर्वाइवल की जो सोसाइटी में एक गेम है वो मतलब ज़बरदस्त हो जाती है टीम बनाने से। तो अगर हम फुटबॉल की बात करेंगे तो यहाँ क्योंकि दो टीम्स होती हैं तो हर एक की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फुटबॉल में 3 किस्म के प्लेयर होते हैं। सबसे पहले अटैकर होते हैं, उसके बाद मिडफील्डर होते हैं और उसके बाद एलियंस को समझ आ जाएगी इन चीजों की? सर मैं एक्सप्लेन करना उसको मतलब चाह रहा हूँ, उम्मीद काफ़ी है उसको समझ आ रही होगी। हाँ जल्दी कीजिएगा जरा प्लीज। सर तो ये 3 किस्म के प्लेयर होते हैं, अटैकर्स। इमरान आई थिंक काफी लेट द अदर स्पीक। इस तरह तो काफी लंबी हो जाएगी आपकी जो डिस्क्रिप्शन है ना। थैंक यू वेरी मच। सर नेक्स्ट शुमाइला बात करना चाह रही थी जी। Sir, basically what I believe is that it's not just about skills. For humans, it's very important to have a sense of identification. Speak up, please. बोलते जाएं आप. For humans, it's very important to have a sense of identification. So being a part of teams also creates that sort of identity for them, that hum is team ka part hai and we're a group and we're going to work together. So that is also important, and that is why we all work in teams as well. Anybody else? Yes, sir. Human beings are social animals और उन्होंने सोसाइटी में मिलके रहना होता है, कोऑपरेट करके रहना होता है। अलोन एन इंडिविजुअल कैन नॉट सर्वाइव। तो जब भी कोई गेम है तो टीम वर्क में आप एक मिल के लोगों के साथ सीखते हैं कि कैसे कोऑपरेट करना है, जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी हेल्प आउट करता है। सो दिस मींस कि इसकी सोशल वैल्यू भी है गेम्स की। सर जी बोलते जाएं। सर हम उन्हें बताएंगे कि आपको सर चलेगा तो बताएंगे ना, आप सर ना करते रहे, बोलते जाएं प्लीज। जी सर, हम उन्हें बताएंगे कि सोसाइटी में आने के बाद हमें अपने लिए प्लेजर के मौके भी ढूंढने हैं कि हम किस तरह एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। और टीम का हम उसे ये बताएंगे कि हमें इंटरेक्शन करना भी ज़रूरी है, बीइंग ए ह्यूमन, क्योंकि हमें टॉलरेंस पैदा करनी है अपने अंदर एज ए प्लेयर। और उसके अलावा हमें कम्पीट करना है दूसरों के साथ, हमने देखना है कि हम किस लेवल पे हैं और वो दूसरा जो टीम प्लेयर है वो किस लेवल पे है। तो ये सारे आंसर्स हम उसको देंगे। That's very nice. अच्छा, और कोई? So we can explain it in this way that so in sociology there's a thing called organismic theory, na? So we can explain that teams inculcate a sense of responsibility in us and makes us a social animal, which is very essential for us. Na? It makes us learn social skills. So because we are independent on each other in a society, and in addition to having a sense of competition and a thrill, teams also are important for human beings to learn how to live in a society. Very good, very good. So we are receiving, yes. Anybody else? Yes, sir. Okay, sir, I would start my discussion with an alien, with the concept of the society first. That what is the society, as we are the humans, and the society is very important for us to live in. And then I will tell them about the theme of competition, that there is the sort of competition with between every individual, every societies. And then I will try to teach them about the teams, that how the teams work, like social integration.
It evolves us like in teams, or we polish our skills, and team is very important for us, like to coordinate or to live in a social harmony or to maintain the social stability. All right. Thank you very much. Let's move on to another question, which comes after this. Why is it these games seem to get more attention than other matters on your planet, like disease, poverty, and hunger? गेम्स के ऊपर आप इतना खर्चा करते हैं, इतने बड़े बड़े स्टेडियम्स बनाए हैं, इतनी बड़ी बड़ी इवेंट्स होते हैं. Why do they get so much attention as compared to other matters on our planet, like disease and poverty? कैसा जबरदस्त क्वेश्चन है. इसका मतलब ये कि उन्होंने ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी किया है. यस, एनीबॉडी? यस सर, हम उन्हें बताएंगे कि अगर हम डिजीज पे खर्च करें, गेम्स पे खर्च ना करें, तो गेम्स पे खर्च ना करने की वजह से हमारे हॉस्पिटल्स भर जाएंगे, हमारी डिजीज प्रेवलेंस और वो सारी चीज़ें, वल्नरेबिलिटी, वो सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी. और दूसरा ये कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर हम गेम्स की तरफ ना आए. तो इन सारी चीज़ों के से निकलने के लिए गेम्स एक बेहतरीन ऑप्शन है. सर मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि जो गेम्स है ना वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है. जब हम मेंटली फिट होंगे तो हॉस्पिटल्स वगैरह में भी नहीं जाएंगे, जब यानी कि बीमार होते हैं तो तब भी हम जाना पसंद, मतलब कोई जाता है. तो जब हम मेंटली फिट होंगे तो हमें जाने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए हम मतलब स्पेंड करते हैं इसके ऊपर ज्यादा मनी भी, टाइम भी. रिक्रिएशन का एक सोर्स है. थैंक यू. सर हम ये भी कह सकते हैं कि गेम्स पे हम लोग इसलिए स्पेंड करते हैं क्योंकि एक प्रिवेंटिव मेजर हम देख सकते हैं कि डिजीज जब हम फिजिकल मेंटल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे तो ज्यादा चांसेस होंगे हम किसी डिजीज की तरफ कम जाएं. What about poverty? Poverty कोई नहीं एड्रेस कर रहा. So I just go on please. Sir, I believe that the reason that games get more attention is because whenever we're watching something, humans tend to like those things more that they can relate to. Not everybody relates with like diseases and poverty. So something that we're not relating to, hum usko kind of like dispose kar dete hain. For games, like I said before, that their teams and her कोई team is representing someone, so because I can relate to that certain team कि जिस तरह मैं पाकिस्तान को support करूँगी or something like that, so we tend to get more diverted towards that sort of thing. Okay. So I will. So I think yes. So I think you may respond in chat also. Chat के अंदर भी आप लिख सकते हैं जो लोग बोल नहीं पा रहे. जरा chat में बहुत थोड़े opinions आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं. So please participate. जी. So I think where this argument is coming from, it doesn't go says anything against games. It says the extra lavish expenditure that we spent on games. So I think we can explain it to them in this way, that as a society, this is something that sells in our society, and as a society we are very I think shallow would not be a suitable word, but we are very superficial as a society. So these things like diseases and poverty gets ignored because nobody is going to buy these things. So support is something, games is something that sells in our society, and by expending, by putting more money on it, we're actually getting more money from it. So that's how our society works. There are dynamics of our society. We can try explaining that to them. Okay. Faz has given a very good, a very relevant point, Fazul Islam. Fazul Hassan says that game is for an hour, whereas diseases and poverty have been there for a long time. Okay. Ye kaun bol raha tha? I would simply say that game is the source of entertainment for us, and we humans tend to gravitate more towards entertainment. Yeah, that's it. Okay. Anybody else? I will endorse the same. People intend. Yes, please. Sir, I will try to build the connectivity between all these things, that the games, disease, and poverty are all interlinked in our society. That if we do not focus on the games, like we cannot, these are the sources of revenue, so we cannot generate revenues as well. And they also help us in mental and body fitness.
So that prevents disease as well. So I will try to convince them, or poverty, when we raise money from the games. So these are also the source of like charity for poor peoples and things like that. So I will try to make the connectivity and try to convince them on this. What is your name? Mahnoor Sajid, sir. This is what we call critical thinking. Connecting dots. Actually, if you look at all these questions, they are different dots of the same aspect, same. They are different aspects of the same picture. And if you put these things together, not just individual questions, but if you put them all together, each question moves the discussion forward, one by one, step by step. And it is coming to bigger problems, and it is becoming, gradually the questions are becoming objective. It started with what is a game? Why do humans play them? Okay, why do they play them in teams? Why are teams important for them? And then you go on to the bigger questions of disease and poverty and things. Anybody else would like to say anything on this? Shall I move on to the next question? Okay, let's take on the next question, please. Why do humans get so emotional and even violent when watching games? Yes, anybody? Why do humans get so emotional and even violent when watching games? We have seen a lot of incidents taking place where there has been a lot of violence. Yes, please. सर अगर टीम की बात की जाए, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान टीम और टीम, सर वो तो सपोर्ट कर रही होती है ना अपने मुल्क को या कंट्री को, तो सर इस वजह से भी लोग जो है तो बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं इस बारे में कि मतलब इमोशनल हो जाते हैं ना, कि मतलब हार जीत फेलियर और इस तरह से। तो सर एक ये पॉइंट भी है कि वो हम अपने मुल्क को या कंट्री को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो फिर वायलेंट होना क्यों इसमें? So that's why. Why do they become violent? I think games are more over सर वो तो उनको ये अच्छा you उनको can ये डर होता है ना कि हम कहीं पे no it's okay you can. Yes, Mahnoor, complete please. I think games are more attached with our emotions, and we as a nation, like we are mostly emotionally attached with games, and there are various various forms of expression. So some people like express their emotions through violence and through like aggression, but some people like mildly avoid these games like games. They just control themselves, but mostly people don't control themselves, so they get hyper and active. That is all. Okay. सर मुझे लगता है कि Akil, I would like to hear from you. Mohammed Imran, I would like to hear from you on this. Ji. A lot of सर मुझे लगता है कि मतलब लोग इसलिए ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं बिकॉज गेम्स खेलते हुए वो अपनी इमेजिनरी लाइफ जो है वो खेल रहे होते हैं। लाइक पबजी एक गेम आई थी, और बहुत से लोग जो रियलिटी में बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो कर नहीं पाते हैं, वो फिर गेम्स के थ्रू करते हैं मे बी। Okay. So, नहीं वो तो ठीक है. That is why there is hero worship and so many things attached to games. Anybody else? सर इसमें मैं ये पार्टिसिपेट करना चाहूंगी कि जो जब गेम्स हो रही होती है ना दो पार्टीज के दरमियान, तो लोग इसलिए इमोशनल हो जाते हैं जब एक पार्टी हार रही होती है और दूसरी जीत रही होती है। वो इंसल्ट फील करते हैं कि हम क्यों हार रहे हैं, कि मतलब हमारी पार्टी को जीतना चाहिए, यहाँ से गलत रिएक्शन ले रहे हैं या इनको इस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए ताकि ये विन कर जाए। तो वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि मतलब हम हारे ना, या हमारी कंट्री की जो टीम है वो ना हार जाए और मतलब इंसल्ट ना हो। Okay. Can I ask some other students to speak up? a lot of बोल रहे हैं बार-बार दो तीन लोग ही जो है होते हैं सारे। इसमें सर मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, इफ यू प्लीज अलाउ मी। जी जी बोले ना प्लीज। जी अलाउ ना करें, आप बात करनी शुरू कर दें। जी जी बिकॉज गेम्स में जो टीम्स हैं वो आपस में compete कर रही होती हैं और हर टीम की अपनी एक फैन फॉलोइंग होती है। तो हर फैन फॉलोइंग जो है उसमें जो फैन फॉलोइंग है दे एक्सपेक्ट कि हम जीतेंगे। तो जब एक टीम उनकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर नहीं पूरा उतरती तो देन दे बिकेम वायलेंट। तो कोई टीवी तोड़ दे, नहीं जी मैं तो आज हार गया हूँ, कोई जनाब अपनी एलसीडी को फायर कर देता है, एंड सो मेनी इंसिडेंट्स आर देयर।
So I think that emotions have emotions and expectations which we attach with our teams which are competing. Okay, okay. Anybody else? Sir, I would like to add. Sir, I would like to add it in a way that there has always been an emotional connection with the games and with your own teams. Previously, I was hearing the comment by Emmanuel Macron in which he was saying that we won't fight in the battlefield, but we will fight now in the soccer field. So this is a new way of expressing our aggression. That is the human nature. So we have just shifted it from expressing our aggression in the battlefield and now towards the soccer field or any other sport. I see. Okay. Exactly. Nationalism and patriotism comes in play. That's what I feel, because the violence doesn't come when you're losing the game. It comes when you won the game as well. A lot of emotions come into play in this. We feel like we're the one playing the game. We put ourselves into it. And nationalism and patriotism is something that makes us violent. Also, as the previous one have said, that hegemony, we want to create our own hegemony. We want to create our own image. That we're the ones, we are the leaders, we are the strong nation. Exactly. Sidra Ali, आपका mic on है. Paika Saman, your mic is on. रिमशा, तुमने बिल्कुल बात नहीं की, हालांकि you were very excited कि हमें बात करनी है. जी बोलें. पाइका. सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि यहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स के बारे में, तो क्या हम इंडिविजुअल लेवल पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते? नो क्वेश्चन, अपनी बात करें आप. सर इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर हम देखें ना तो एक खेलने वाला इंसान और एक देखने सर अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, जब भी हम कोई गेम देखते हैं तो हम बायस्ड होते हैं और हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि एक विनर होगा और एक लूजर होगा. जब विनर विन कर रहा होता है तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं, और जब लूजर लूज कर रहा होता है तो लूजर विन करने जा रहा होता है तो हम वायलेंट हो जाते हैं. Sir, I think when we not consider a game is a part of sport, but indulge a violence in the game, then it will result a violence in the creating shows. So ये बेसिक रीजन है कि हम एक्सट्रीमिज्म को जो है ना गेम में इंडल्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वायलेंस आ रही है. जबकि हमें गेम को जो है ना वो एज अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट कंसीडर करना चाहिए, उसमें वायलेंस नहीं करना चाहिए बल्कि एज अ फन देखना चाहिए. नहीं करना चाहिए नहीं. एलियन ने एक चीज ऑब्जर्व की है और वो आपसे पूछ रहा है या पूछ रही है कि ये ऐसा क्यों है. हम उसको ये नहीं कह सकते ऐसा होना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट द वंस हु आर प्लेइंग. They say that you humans, while playing, you become very violent, you become very emotional. Why so? सर मैं कुछ कहना चाहूंगा. जी बोलते जाए ना. हाँ, रिजवान. Yes. सर एक्चुअली गेम्स खेलते हुए उनकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो रही होती हैं जो उन्होंने अपनी टीम के साथ लगाई होती हैं कि हमारी टीम इस तरह खेलेगी, तो जब वो हर्ट हो रही होती है तो आई थिंक वो इसलिए इमोशनल हो जाते हैं. Okay. So one thing I've observed that only nations, underdeveloped nations, the nations that are not that developed, have expressed violence and get so emotional when they lost a game or even when they win a game. And that's because a lot of our suppressed emotions, we want to show or express our emotions that have been suppressed from a long time. This violence is limited to developing nations only. We have seen Italy becoming violent many times. Germany, for example, many of the nations. रिजवान आप बोलना चाह रहे थे? जी सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये हमारे अंदर एक नेचर, उन्हें हम ये समझाएंगे कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है. क्योंकि जब हम कोई गेम देखते हैं तो अगर हम जीत जाते हैं तो हम खुशी का इजहार करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और अगर हम कोई देखने वाले उनकी कोई टीम हार जाए तो हम वायलेंट भी हो जाते हैं. ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर इंसान के अंदर पाया जाता है. हम उन्हें ये समझाने की कोशिश करेंगे. ओके, एनीबॉडी एल्स? सर यही इमोशंस जो है ना, ये हमारे जो जिस टीम को हम सपोर्ट कर रहे होते हैं और ये जो सपोर्टर्स होते हैं, इनकी वजह से टीम का भी जो है हौसला वो बढ़ता है और वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ये रेज हैंड किया हुआ है हिरा ने. जी सर, मैं कहना चाह रही थी हैंड रेज करें और बोले प्लीज. हाँ, ऐसे कर लें. जी सर, मैं कह रही थी कि
जो कंट्रीज होती हैं उनमें लोग चाहे वो रिच हैं या पुअर हैं, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं मनी अपनी। तो अगर वो पुअर हैं तो भी वो वायलेंट हो जाएंगे, और अगर रिच कंट्री से हैं तो भी वो वायलेंट हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया मनी। तो मनी भी एक फैक्टर है इस चीज में कि जो ह्यूमंस के इमोशंस को अफेक्ट करता है। और दूसरी बात ये कि कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं कि बस हमारी जो नेशन है ना वही टॉप पे रहे, चाहे वो किसी भी तरह से हो, बैटल फील्ड की तरह हो या फिर गेम्स के थ्रू किसी भी तरह से हो। तो अगर उनकी जो टीम है वो हार रही है तो वो समझते हैं कि हमारी पूरी दुनिया में जो है वो बेइज्जती हो रही है, इस वजह से भी लोग वायलेंट हो जाते हैं। यानी Rubab टू is स्टे next. Right. respected in the committee of nations, they choose games, and if they don't get what they are expecting, then they lose their temper. Thank you, Thank you, Ira. sir. Thank you. Rubab, do you want to speak up? Ali? सर मैं जी बोले। Rubab बोल रही है। हाँ। सर मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि यही इमोशनल जो अटैचमेंट होती है, जब उन लोगों का रिएक्शन आता है, इसी वजह से तो इन गेम्स को इतनी हाइक मिलती है सर। तो मैं Ali, अपना ये next पॉइंट is Ali. ऐड करना जी, okay, thank you. Ali, सर do you want to मैं say something? Yes. सर लोगों का गेम के साथ हम ऐसे करते हैं कि हम उसमें हैप्पीनेस तलाश करने की कोशिश करते हैं, जब हमें वो नहीं मिलती तो हम वायलेंट हो जाते हैं। Yes, मरियम फातिमा। सर मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगी कि गेम से पहले जो हाइप क्रिएट की जाती है वो ज्यादातर उस गेम में अगर हम लूज करें या टीम लूज करे तो वो वायलेंट होती है। अदरवाइज अगर कोई गेम ऐसी है जिसमें हाइप क्रिएट नहीं की जाती है, उसमें वायलेंस भी इतना नहीं होता। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, हाइप क्रिएट की जाती है, इस वजह से वायलेंस ज्यादा होती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच हो, कोई हाइप क्रिएट नहीं की जाती तो वायलेंस भी नहीं होती है। सो जो बेसिकली मैच से पहले जो हाइप क्रिएट की है वो वो इसमें एक reason है इसमें। ज्यादा मेन फैक्टर है। इंजीनियर अंसर महमूद। सर एक ह्यूमन की नेचुरल एक है कि उसकी ना इंक्लिनेशन होती है, नेचुरल इंक्लिनेशन होती है किसी एक टीम के साथ। और जब वो सालों साल चलती है, जिस तरह हमारा होता है कि किसी एक टीम के साथ हम सालों साल सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो स्ट्रांग इमोशनल अटैचमेंट एक हमें लीड करती है कि यार अब ये टीम हमें ही रिप्रेजेंट कर रही है। और ग्लोबल लेवल के जब मैचेस या टूर्नामेंट होते हैं और वहाँ पे एक हाई एक्सपेक्टेशन होती है कि यार हम ही जीतेंगे, और जब हम नहीं जीते तो वी फील इंसल्टेड, और फिर उसके लिए फिर हम अपनी टीम को भी गालियां निकालते हैं और वायलेंस की तरफ भी जाते हैं। अरसलान राजा, ओके, थैंक यू। सिद्रा, डू यू वांट टू से समथिंग? सिद्रा और अरसलान राजा हैंड्स रेज किए हुए आपने। Sir, I want to add something. जी। I think that violence is the result of defeat. हमें गेम में कंपटीशन सिखाया जाता है, जीतना सिखाया जाता है, लेकिन हमें हारना नहीं सिखाया जाता। तो जब हम हार जाते हैं, then we do not know what to do, and as a result हम violent हो जाते हैं। चलिए, let's move on to the next question. Actually, I have one last question on this scenario. What would happen? What would अब ये बिल्कुल एक different question। आज next की तरफ चलते हैं, काफी बात कर ली, इसके ऊपर टाइम भी शॉर्ट है। एक तरह अब आप माइक जरा म्यूट कर लीजिए, एक माइक म्यूट करें जरा, नई चीज सिचुएशन सामने आई है। माहर माइक म्यूट करें अपना। Okay, what would happen if no human could ever play these games again? That's an interesting scenario. What would happen if no human could ever play these games again? हैंड रेज कीजिएगा, इससे जरा आसानी रहती है माइक बात करने में। अगर हमें इजाजत ही ना मिले सिरे से, हम या कोई इस तरह की चीज हो जाए कि हम गेम्स खेल ही ना सकें। यस फैजुल हसन, प्लीज। हम लोग ना हो जाएंगे सर, ये हमारी एबिलिटी के साथ। अब आप हैंड रेज किए बगैर ना बोलिएगा प्लीज। फैजुल हसन, आपने हैंड रेज किया हुआ है। रिमशा इफ्तिखार, यू हैव रेज्ड योर हैंड। Okay, sir, well, speak up. मैं बोलता हूँ, बीच में कोई और बोलता है। अच्छा, मैं कहना चाह रहा था कि जब अगर ह्यूमन ये एबिलिटी लूज कर जाते हैं ओवरनाइट, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमें इमोशनली, क्योंकि we aren't that much invested in games after all. Okay, that's all. Right, Rimsha. सर अगर डे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, हम थोड़ी देर उसको अफेक्ट करेगा और इंडिविजुअल भी, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा उसमें नहीं होगा।
Okay, Ghulam Dastagir, do you want to? Thank you. No. Saad Malik. Sir, I think that games are the source of utilizing our energy in a very positive way, and they are the source of taking out our emotions, our aggression not in a very negative way, but in a slightly positive way. So if we lose this ability to play games out of the blue, we would be I don't know. I think that we will be using our energies and our emotions perhaps in a negative way. Okay, Mahnur Sajid. Okay, sir, I would tell him that it is very unpractical approach, like no human could ever play these games, or if it happens, so then it would create a boredom in this society. Like people, because games are the major source of recreation or recreational activity होते हैं, so it would create boredom, or that leads to more towards the depression or more towards the decline. All right, thank you. Maruf Yasin. सर मेरे ख्याल से भी ये इम्पॉसिबल है कि जो गेम्स हैं वो कंडक्ट नहीं बंद हो जाए। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं कह रही हूँ कि बच्चे भी हैं तो वो गेम्स जो है प्ले करना पसंद करते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे गेम्स खेलना ही बंद हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, अहमद क्या नाम है आपका? अहमद हुसैन। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एक गेम्स हैं वो हमारी जो हमारी एक मेंटल डिप्रेशन होता है, या जो हमारी एक अंदर की ऐसी डिसेबिलिटीज होती हैं उनको मतलब पॉजिटिव वे में उनको चेंज करने के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाइल्डहुड से लेके नेशनल लेवल तक, जैसे कि किसी ने बात की, तो हमारी सोसाइटी में ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों को भी खेलने नहीं, जो उसकी इजाज़त नहीं होती, तो वो उनके लिए एक अलग किस्म का नेगेटिव पॉइंट उनके माइंड में आ जाता है। एक नेगेटिव मेंटल डिसेबिलिटीज उनके अंदर पैदा हो जाती हैं, तो वो सोसाइटी में मूव ऑन नहीं कर सकते। तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम डिप्रेशन को कम करना चाहें तो स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, रिदा अब्बास, ये क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस वक्त। व्हाट वुड हैपन इफ नो ह्यूमन कुड एवर प्ले दीस गेम्स? यस, मोहम्मद इमरान, प्लीज। जी सर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये जो गेम्स हैं ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। टाइम के साथ हमने सीखा है कि ह्यूमन सोसाइटी में किसी भी इंडिविजुअल के लिए या सोसाइटी के लिए गेम्स हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं। ह्यूमन बॉडी को फिजिकली कोई ना कोई एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो पहले वॉर्स होती थी, जंगें लड़ी जाती थी, और जंगों से बचने के लिए फिर इंसान ने फिजिकली अपने आप को इंगेज करने के लिए इन्हीं गेम्स की तरफ उन्होंने रुख किया। अभी ओलंपिक गेम्स जो पहले होती थी वो उसमें इंसान मरते थे, लोग एक दूसरे से लड़ के एक दूसरे को मार के, वो गेम्स थी। उनको फिर इस तरह कन्वर्ट किया गया है कि फुटबॉल में और इस तरह से गेम में जिसमें एक दूसरे को मारा नहीं जाता। तो हम ब्रूटैलिटी से इस तरफ आए हैं कि जस्ट इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जिससे हम प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं। तो अगर इनको ख़त्म कर दिया जाए तो फिर मुमकिन है कि हम उसी तरह फिर वापस चले जाएं अपने उन्हीं ब्रूटल एक्टिविटीज़ की तरफ। ओके, थैंक यू। दोबारा सिद्रा अली। यस सर, मैं तब से वेट कर रही, मैं इमरान के ही पॉइंट को आगे लेके चलूंगी। मैं तब से ये सोच रही हूँ कि अगर हम गेम्स और स्पोर्ट्स को इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो बेसिकली जब हम एलियंस को ये एक्सप्लेन करेंगे कि गेम जो है वो ऐसी एक्टिविटी है जिससे हमें रिक्रिएशन मिलती है, वहां से हम फॉरवर्ड चलेंगे तो ये बताएंगे कि हमें जो कोऑपरेशन की जरूरत है, क्योंकि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, तो उसको काफी चीजें सीखने के लिए अपने साथ के लोगों के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। और फिर इसी तरह उसका एक बेस्ट सोर्स गेम है। और जब हम गेम्स को खेलना एक और चीज है, जब हम उसको देखते हैं तो फिर हम अपने ग्रुप के साथ या अपनी टीम के साथ इतने अटैच हो जाते हैं कि हम लोग उसको किसी भी हालत में जितवाना चाहते हैं। और सबसे लास्ट में फिर ये चीज आ जाती है कि अगर हम लोग गेम्स ना खेलें या हमसे ये ऑप्शन छीन लिया जाए, जिस तरह कि इमरान ने कहा कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, तो सेम पॉइंट मेरे ज़हन में भी था कि हम लोग दोबारा से उसको रीगेन करने की कोशिश करेंगे, ना कि उसको स्किप करके किसी और तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें उसी में रिक्रिएशन मिलती है और वही हमारी नेचर बन जाती है फिर। ओके, हारिस खालिद। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नए स्टूडेंट जरा बोलें, जो लोग पहले बोल चुके हैं जरा उनको। जी हारिस खालिद, डू यू वांट टू? मैं बोलिएगा।
सर एक तो ये कि हो गई हैं पार्क्स का तो करते हैं, लेकिन अब हम वहाँ पर खेलने नहीं जाते। मोस्टली जो अब लोग जाते हैं पार्क्स और विजिट्स में, वहाँ पर सिर्फ एक अपनी टिकटॉक या वीडियोस बनाने के लिए जाते हैं जिन्हें अपलोड करें। तो एक तरह से गेम्स का हमें एलियंस को यही कह सकते हैं कि ये गेम्स से एक तरह से काफी हद तक खत्म हो चुकी हैं। ओके उमर, बस ये लास्ट स्पीकर हो गए इसके ऊपर। जी उमर, यू रेज योर हैंड। सर ये हमें एलियन को ये समझाना पड़ेगा कि ये इतना आसान नहीं है कि हम ओवरनाइट गेम्स को छोड़ दें। इसके अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स है, क्योंकि गेम्स का एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है, जिससे हम मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेशन, स्पोर्ट डिप्लोमेसी हो गई। मतलब जिस तरह हम देख सकते हैं कि 2011 में जब पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था, तो उसमें दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर को एक मुलाकात करने का जरिया मिल गया था। इससे रेवेन्यू जनरेट हो रही है, और मतलब ये इस तरह हम नहीं छोड़ सकते। और दूसरा इमोशनल अटैचमेंट भी है, और सिर्फ रिक्रिएशन नहीं है। मतलब हम इसको इस एक पॉइंट को की तरफ से नहीं देख सकते कि गेम सिर्फ रिक्रिएशन के लिए हम खेलते हैं, या ये एक पूरा एक इकोसिस्टम बन चुका है जिससे पूरी दुनिया को फायदा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये सो स्टूडेंट्स, आई एम कंप्लीटिंग दिस, ये वाला जो एक राउंड था हमारे पास, जो एक सिनेरियो जो आपको दिया था कि देयर आर, बाद लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, एंड वेरी इंटरेस्टिंग रिमार्क्स कमिंग अप इन चैट ऑल्सो। काश कि ये लोग बोलते और इसको अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते। सिनेरियो था कि एलियंस के साथ अगर आप, दे आर विजिटिंग द अर्थ, और आप स्पेसशिप में उनके साथ दुनिया को देख रहे हैं, तो कहीं एक फुटबॉल स्टेडियम के ऊपर वो रुक जाते हैं, एंड वन ऑफ द एलियंस इज कंफ्यूज्ड कि ये क्या है। तो वो फिर मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है वो पूछता है। हमने क्वेश्चंस की प्रोग्रेशन देखी, दे वर फ्रॉम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जनरली 5 क्वेश्चंस के अंदर उसने मुख्तलिफ जो थी वो डायमेंशंस, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट मोस्ट ऑफ यू स्पोक अप क्वाइट वेल। थोड़ा सा मैं अगर आपके साथ इवेल्युएट करना चाहूंगा कि आपको ये एक्टिविटी इस वक्त कैसी लग रही है। जो बेसिक पर्पस था हमारा यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की वर्कशॉप का, वो यही था कि आपको एक नई सिचुएशन के ऊपर नए आइडियाज जो हैं उनको एक्सप्लोर करने का मौका मिले। हाउ फार डू यू थिंक इज सो फार दिस एक्टिविटी सक्सेसफुल इन दैट? उसके बाद मैं सिनेरियो 2 की तरफ जाऊंगा। आप बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? कैमरा ऑन है किसी का? ओके, वुड यू लाइक टू से समथिंग? ऑडियो पे अगर आप बोलना चाहें तो बोल लें प्लीज। अच्छा, आपकी माइक जो है वो ऑफ है इस वक्त, ठीक है। सो दैट थोड़ी सी हमें कोई एनकरेजमेंट मिल जाए कि नेक्स्ट एक्टिविटी हमने करनी है नहीं करनी। यू कैन स्पीक अप इफ यू वांट टू। वेरी इफेक्टिव, बहुत इंटरैक्टिव सेशन था सर ये, और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज मिले देखने को हमें, डिफरेंट लोगों के, तो हमारी अपनी भी एबिलिटीज बढ़ी जी। हाँ, एबिलिटीज इनहांस हुई हैं। Okay. This must be continued. Okay, right. I will take just a 5 minutes break. हमारे पास एक scenario 2 है, और that is also very interesting. ज़्यादा अगर आप इसके अंदर, अब आपको समझ आ गई है कि पार्टिसिपेट कैसे करना है, तो उसके अंदर ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेशन की गुंजाइश मौजूद है। मैं जरा 5 मिनट्स की ब्रेक लूंगा यहाँ पे।